Hi, I'm Anushree, and you're watching me on Cineblues. Thank you. Thanks a lot. Hi, friends. This is Film Critic Ahwan, and you are watching me on Cineblues. And today we have the director, writer of the recently released Z5 film starring Radhika Apte, that is Mrs. Undercover. Hi, Anushree. How are you doing? Very well. How are you? I'm good. Thank you so much. Anushree, you started your career as a writer, and now you have directed Mrs. Undercover as well. And that too with Radhika Apte, who is one of the best actresses now we have in the industry. And so, can you please tell me how it happened, like from writing to this your debut direction? How did the process happen? Can you just tell me? See, the thing is, I've wanted to direct for a while now because like you said, I started off as a writer, and then, Right. um, I produced a Bengali film, I produced a web show, I produced a couple of digital films. So Mhm. that process in itself made me realize कि मुझे फिल्में बनानी है as a Acha. director also. And Right. during that time, what was most important to me as a filmmaker and still is and will continue to be is the fact that I want to tell stories that are that give a message, that Yes. give a message to the society and also are entertaining. मैं masala Hindi picture की fan हूँ. Like I've grown up watching movies in Chandan and Shan के stalls में बैठ के. मैं वो सीटी ताली ऑडियंस का हिस्सा हूँ. मैं आज भी I'm still that audience, that Okay. cinema loving audience. तो Right. मुझे ऐसी एंटरटेनिंग पिक्चरें बनानी है जो Mm. पूरी फैमिली एक साथ बैठ के एंजॉय कर सके, साथ में बैठ के देख सके. तो I've always wanted to make those movies. So that particular thought was always there in my mind, that what is that one story Right. that completely has my heart. Mm. And when I got the idea of Mrs. Undercover in 2017, I just narrated it to Abir Sengupta, who's the producer of Mrs. Undercover, who's also Okay. my business partner. Ah. And उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि ये आइडिया बहुत अच्छा है और Ah. जिस दिन तुम ये फिल्म लिख दोगी, I promise you I'll produce it. So, Acha. but then I went on to producing a couple of things in 2018 and 19. मुझे थोड़ा वक्त लग गया स्क्रिप्ट लिखने में. तो 2019 एंड में मैंने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट करके फिर आई नरेटेड इट टू अबीर और उन्होंने मुझे तुरंत ही बोला कि ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और आप कौन से एक्टर के पास जाना चाहते हो. तो लिखते टाइम ही मेरे दिमाग में था कि I would want somebody like a Radhika Apte to kind of play Mrs. Undercover. And somebody like a Radhika Apte, there's nobody like Radhika Apte. There's only Radhika Apte. So then Abhi मुझे ले गए राधिका के घर narrate कर film. And this I remember it was 2 days before the first lockdown. Yeah. So फर्स्ट लॉकडाउन मतलब मार्च 2020 की बात कर रहे हैं आप? yes, ओ yes. बाप रे. And तब हम लोग गए and मैंने उनको फिल्म का आइडिया सुनाया and I was like 5 minutes into the narration and she stopped me और राधिका के जो एक बहुत ही क्यूट स्टाइल है उनका, उसमें उसने बोला ए अनुश्री आई एम डूइंग दिस फिल्म. हाँ आगे क्या होता है. And I first time filmmaker and narrating to Radhika Apte, like the stature that Radhika Apte has as an actor. तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा स्टन हो गई थी उनके रिएक्शन से, लेकिन वो जितनी दिल की साफ है और जो फील करती है वो बोल देती है, उनमें कोई फसाड नहीं है और वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्टर हूँ मैं क्यों अभी रिएक्ट करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था. उन्हें पसंद आया तो उन्होंने मुझे बोला कि आई विल डू इट. फिर ऑब्वियसली उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड वी हैड आवर, फिर तो हम जूम पे ही मिले क्योंकि वो लंदन में थी, हम यहाँ थे एंड लॉकडाउन भी चल रहा था. So we met on Zoom and we had our discussions and then, we could shoot only between the first and second lockdown. First lockdown khatam hua, cheezein thodi better hui and then, then we shot the film and hum wapas aaye shoot karke. We shot for 29 days. That's all that I got to make the film. And yeah, it was shot in 29 days. Yeah, I read that. And, I think I mentioned in my review also. Okay. So then, I mean, हम लोग वापस आए and 4 दिन में second lockdown हो गया. So it was a really tough shoot क्योंकि COVID restrictions and उस टाइम पे कैलकाटा में political rallies चल रहे थे, तो बहुत locations हमारे shift हो रहे थे, बार-बार cancel हो रहे थे.
कोई और बन रहे थे, तो हमें बहुत सारे और मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन Right. I'm very happy with the way the film has come out, and the amount of love that we are receiving from the audience is just phenomenal. So I'm very Fantastic. Yeah, the film is actually very good. As an I really loved it, and I just wanted to ask you one thing. See, I started watching the film. It has a very from the beginning. It has a very different tonality, right? बहुत serious तरीके से start होता है. एक gruesome murder है. yeah Sumit Vyas is the guy, and yeah he's the main culprit. And huh, then it switches the tonality to little yeah lighter mood and थोड़ा सा funny, jovial, humorous हो जाता है. So was it deliberate, yes, because Anushree? Was it deliberate? it's a combination genre, right? हाँ, It's a new genre which we are trying to explore हम्म, in our country, in our medium, which अच्छा, is cinema. So it's हम्म, a spy comedy, yeah, and we are amalgamating two completely different worlds. You know, right, where we are absolutely humanizing a spy's character and finding fun in what is happening to the human inside her, yeah, rather than completely उसको वो फुल ब्लोन एक्शन हीरोइन जो एकदम परफेक्ट होती है लारा हम्म, क्रॉफ्ट की तरह Lala Croft, नहीं है वो, शी इज अ, उसको बेचारी को कवर housewife दिया at गया है. heart. Yeah, and her life is different now, and Hmm. the special force is also facing human problems. कि अब Right. अगर हम इसे कॉमन मैन को नहीं पकड़ पाए तो चीफ गिल स्पेशल फोर्स को ही बंद कर देंगे, Hmm. तो मतलब Hmm. बाकी स्पाइस की सैलरीज भी बंद हो जाएगी, तो सारे तो ह्यूमन है ना, they हाँ, are all human. So it was a humorous take also on certain serious situations, but there is right. a serious criminal out there, Yeah. so it was an amalgamation, it is an amalgamation of different genres जिसे हम spy comedy बोल रहे हैं. Right. Right. So it's a new thing, it's something that is fresh, and fresh as the genre, combination genre, हाँ, especially in the space of a spy film. So हाँ, we wanted to consciously do that, and I think more than anybody else, the audience has accepted it and yeah. welcomed it and loved it so much. So as a filmmaker, I get a lot of encouragement that when you're as a filmmaker trying something new. So Yeah. obviously there is always that palpitation कि हम कुछ नया करने की कोशिश करें, तो how Hmm. is it that we are going to be received by the Hmm. audience? Do they enjoy it? Would they look forward to? But the amount of people who have written to me personally, Hmm. to my producer Abir or my teammates, कि Hmm. हमें part 2, we want to see what happens in the sequel. To be And continued. I think, yeah, in the end it yes, shows to be continued. Right? so that clearly means that the endeavor that we had of trying a new genre, Hmm. and that too Radhika Apte in such an avatar, like people have not seen her before. Hmm. Being Hmm. a typical masala Hindi picture hero, Hmm. she's done everything in the film. Hmm. Action ho, dance ho, emotion ho, comedy ho, उन्होंने सब कुछ ही किया है फिल्म के अंदर. Yeah. So I think it'll only get better from here. मेरी भी पहली picture है, so I also have learned a lot in the journey, and my endeavor is to only get better and work harder to make better Def- films. Yeah, definitely, definitely. Anushree, tell me about Rajesh. Like he's the Rangila, right? He's playing Rangila. Yes, He's one of my yes, personal favorite. I have watched him from that No One Killed Jessica in yes. 2011. What an amazing actor! And very little is known about him. Like I have hardly seen his interviews. Tell him, how is he to work with? Rajesh ji is a powerhouse, first of all, Acha, and हाँ, he's a definitely. very good human Hmm. being. Hmm. Also a phenomenal actor, which is common knowledge. वो रहते कोलकाता में है, उनका घर वहीं पे है, Oh, तो I didn't know this. Okay. yeah, so he's based out of Kolkata, and Okay. उनके साथ ये होता है कि वो I think industry के one of the busiest actors, Mm-hmm. तो उनके पास डेट्स ही नहीं होते कभी भी. तो जब हम ये फिल्म उनके पास लेके गए तो उन्हें बहुत पसंद आई थी फिल्म, और उस टाइम पे वो भूल भुलैया 2 की शूटिंग कर रहे थे, तो अच्छा. उनके कुछ ब्लैंकेट डेट्स थे, और कोविड की वजह से सारे ही जो फिल्म बना रहे थे, हम तब वी वर ऑन द सेम बोट, Right. we were facing similar issues on different film sets.
तो डेट्स भी वर्क नहीं हो रहे थे, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही थी बिकॉज आई रियली वांटेड टू कास्ट हिम. तो जब मैं कोलकाता गई थी रेकी के लिए, तो वो ही टुक द एफर्ट ऑफ कमिंग एंड मीटिंग मी. एंड उन्होंने मुझे बोला था कि अनुश्री, मुझे तुम्हारी फिल्म बहुत पसंद है और मुझे पता है कि डेट्स वर्कआउट नहीं हो रहे. मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए डेट्स वर्कआउट करो तुम कुछ भी करके. And I was like, sir, how do I do this? Because also Radhika was there for a short period of time. उनका भी आगे पीछे बहुत बहुत schedule सबके tight थे. I don't know how magically my team and I made another schedule altogether, and we kind of figured out Rajesh's dates. तो वो dates figure out होने के बाद I was just so happy. And then जैसे ही वो सेट पे आए and उन्होंने he and I interacted, and we kind of got into shooting. It was just the most phenomenally magical experience any director can have. Because ये सारे आप देखिए, राधिका आप्टे, सुमित व्यास, राजेश शर्मा, ये सारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि you see magic happening on screen on your monitor only, and as a director and as a writer, जब आपने कुछ लिखा है, आप कुछ डायरेक्ट कर रहे हो और आप उस इतना खूबसूरती से आपका ब्रीफ किसी ने इतने अच्छे से उसको इम्बाइब करके परफॉर्म किया है, तो उससे खुशी की बात किसी भी डायरेक्टर के लिए हो ही नहीं सकती. और वो मैं वर्ड्स में आपको बता नहीं सकती. So it was just and Radhika Apte और राजेश जी की जो केमिस्ट्री भी है फिल्म के अंदर, it is a house on fire. They are completely crazy, and that's what I also worked for the film, right? तो राजेश जी के साथ तो मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया. और उनका लास्ट डे था शूटिंग का, जो उनका सीन सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, जो रेस्टोरेंट वाला सीन है जहाँ पे he describes the housewife. वो उनका लास्ट शूटिंग डे था हमारे शूट में, एंड वो उनका लास्ट सीन था. अच्छा. एंड जब उन्होंने परफॉर्म, वो वन टेक ओके था. ये जो आप फिल्म में देख रहे हैं, that's the only take I have. एंड पूरे यूनिट ने खड़े होके उनको स्टैंडिंग ओवेशन देके अपलोड किया था उस टाइम. अरे फैंटास्टिक. बिकॉज वो सीन ऐसा है कि इवन एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, वी स्टूड अप एंड वी क्लैप्ड फॉर हिम. उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया उसको. और जो मैंने उनको उस टाइम पे ब्रीफ दिया था, वो वही था कि सर, आप इस वक्त कृष्णा है और दुर्गा अर्जुन है, और उसे नहीं पता है कि वो क्यों ये नहीं करना चाहती है, और उनकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वो खुद नहीं जानती अपने आप. तो आप उन्हें इस वक्त गीता का सार दे रहे हैं. आप वो बन जाइए. And see how he performed. And then that evening he had called me, और उन्होंने 20 minutes मेरे से फोन पे बात की थी, और उन्होंने मेरी बहुत सारी तारीफ की थी. तो मैं बहुत खुश हो गई थी उससे. उन्होंने कहा था, इतनी क्लैरिटी वाली डायरेक्टर के साथ मैंने कभी पहले काम नहीं किया, और तुम बहुत आगे जाओगे. उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दिए थे उस फोन कॉल पे. तो उनके साथ तो मेरा बहुत फिनोमिनल एक्सपीरियंस था काम करने. फैंटास्टिक. नहीं, उनका केमिस्ट्री आपने जैसे बोला, इट इज क्लियरली शोइंग ऑन द स्क्रीन. दे आर बोथ वेरी स्पॉन्टेनियस. राजेश एंड Radhika Apte, not also Sumit Vyas. I remember one scene, and that also shows in the trailer. एक जगह पे Radhika Apte गिरती हैं on the when she is doing some work. उनके बाहर जो होता है ना पोर्टिको में, वो गिरती हैं. वो क्या इतना नेचुरल लगता है ना वो. पर वो खुद ही ऐसे गिरी थी. मैंने उनको बोला था कि हम शूट ऐसे करेंगे, फिर इतना वाइड शॉट नहीं लगाएंगे, हम गद्दा डाल देंगे नीचे, आप शायद कर जाओ, ऐसा कुछ करेंगे so that she doesn't get hurt. She said, no, what was your vision? What did you want me to do? I said, I wanted you to slip. मतलब आप गमले में पानी डाल रहे हो, और she's a clumsy girl, right? तो clumsy character basically. तो my idea was कि वो पानी डालते डालते खुद ही slip हो गई. तो she said, तुम्हें वो करना था. I said, yes, मुझे वो करना था. She said, I'll do it. अच्छा. Radhika, you will get hurt because वो पूरा जो घर है वो मार्बल का है, तो of course it will hurt. She said, don't worry, I'll do it. And मैंने अपने फोकस पुलर को और सारे टेक्निकल टीम को बोला था, प्लीज let us not make any technical mistake, कि फोकस आउट हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई कि जिसकी वजह से हमें रीटेक करना पड़ेगा. तो we obviously she fell, she slipped on her own. It looks so natural on the screen. As in my own, I had to rewind it and see it again.
Yes. क्या हो रहा वो एक्चुअली गिरी है, वो एक्चुअली स्लिप हुई है, वो कुछ मतलब है? हमने कोई गिमिक है ही नहीं उसमें, शी फेल, शी जस्ट स्लिप्ड. Amazing. That comes so naturally. Anyway, Yes. Anushree, why did you choose Kolkata? Any personal connection or Yeah. any? Is it your favorite place or? Huh? Yes. Yes, absolutely. I produced a Bengali film in 2015, जिसका नाम Okay. जो मेरा जो दिलो पर है, जो हाँ, हाँ, वहाँ के सुपरस्टार्स के साथ हमने फिल्म बनाई थी, जो आबिर जो मेरे बिजनेस पार्टनर है और हाँ, मिसेस अंडरकवर right. अभी प्रोड्यूसर भी है, संदीप, हाँ, उन्होंने लिखी और डायरेक्ट की है. तो अच्छा, और वो मेरी पहली फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर, यू हाँ, नो. तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा कोलकाता में रही, एंड अच्छा, हमने बहुत एक्सटेंसिव रेकीज की, क्योंकि आई एम हम्म, अ मुंबई बॉर्न एंड ब्रॉट अप गर्ल. तो हाँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था, एंड जब हम लोग गए तो बहुत एक्सटेंसिवली मैंने उस सिटी को ट्रैवल किया. और आई डोंट कोलकाता जाए, एक्सप्लोर करे और उन्हें कोलकाता से प्यार ना हो जाए, ऐसे तो मैं किसी से मिली ही नहीं हूँ अब तक. तो मुझे भी हो गया कोलकाता से प्यार. और वो ऐसी जगह है ना, वो बहुत सिनेमैटिक जगह है, तो इट हैज एन absolutely, ओल्ड वर्ल्ड चार्म इन अ मॉडर्न वर्ल्ड. right, You know, right. it's somewhere, it's very vintage and modern at the same time. So Yeah, it automatically becomes the character of your film yeah, rather than becoming a location कि hmm, आपने फिल्म यहाँ बेस की है. वो ऐसा नहीं लगता. फिर वो it starts adding to your film as a character, you know. तो absolutely, जब मैंने आइडिया सोचा ही था, तो in the thought only I had कि there is this girl जिसका cover है that she's supposed to get married to this small time hmm, businessman in कोलकाता. तो hmm. आइडिया लेवल पे ही वो था कि कोलकाता तो था ही, तो कोलकाता was So, the character. yeah. So coming to that, are you going to explore the backstory of Durga in your upcoming more? I might, for sure Uh, I might. Yeah. that is very much the I think the audience needs as in वो Yes. backstory कैसे वो दुर्गा से that undercover बनी. जी. Yeah. So anything next, any projects that you would like to tell? well, मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज 1-1.5 महीने में या 2 महीने में मेरा नेक्स्ट अनाउंसमेंट आएगा. तो अच्छा. we are at the tail end of, you know, signing the dotted line and everything. So it's a little early to talk about it, but Yeah. I am going to, and what I'm working largely on is a spy universe, जो Okay. spy comedies के zone में ही होगा. And you know, I want to get better with the genre and make movies which are in the same space. So that is Right. one part of what I'm doing. I'm Right. also making a psychological thriller. Wow, that is my personal favorite genre. Mine too, actually. So Oh, क्योंकि you मुझे have written पता so है many कि crime. मुझे I think you have written so many things in for CID, right? I think you are a crime specialist more. सिर्फ सीआईडी नहीं, I've written all crime shows on TV. जितने Yeah, सारे yeah, एपिसोडिक क्राइम शोज हैं मैंने सारे लिखे, और मैं yeah. बहुत You're a छोटी crime थी उस time specialist. पे. That way. Right. That time I was what, 21, 22. तो हाँ, बहुत ही छोटी थी मैं उस टाइम पे जब हाँ, लिखती थी. एंड मेरा पूरा बचपन आई रेड यू नो crime novels and Agatha Christie and Jeffrey right. Archer, and you know that the my I've been a very avid reader. मैं दो ही चीजें वैसे भी करती थी, बुक्स पढ़ती थी और पिक्चर देखती थी. तो मेरी दोनों मोहब्बत है मेरी जिंदगी ये दोनों. तो I so there's a psychological thriller also that I'm making. I'm also producing 3 films जो Wow. you know अभी डायरेक्ट करेंगे. तो वो सारे अनाउंसमेंट्स आई थिंक इसी साल में हम कोशिश करेंगे कि आ जाए, जैसे जैसे इंशाल्लाह साइन होता जाएगा सारा कुछ. कुछ 2-3 चीजें तो हो गई है ऑलरेडी, but my plans are now to make a lot of more movies, and as a director and as a producer. Great, So great. I'm Great. very excited. I'm at least I'm staying tuned to that for your announcements. And Anushree, trust me, this film has actually touched the heart of many people. Yes. जिससे मैं बात करता हूँ, मतलब my Bengali set of friends also they're there, and they have really loved the film, and we really wish you do well, and all your upcoming films and projects do wonders at the for the audience. Thank It's you. amazing. It's amazing. It's really amazing, and really hats off to you. Kudos to you. Thank you so much. It was Thank lovely you. talking to you, Anushree. Have a great day ahead and a great week. Likewise. Thank you so much. Bye. Thank you Bye. so much. Yeah. Thank you.